Okay. So, so, very good afternoon. In the previous class, we have discussed up to means different techniques in rapid prototyping process. Means different techniques like stereolithography apparatus, phase deposition modeling, uh, laminated object manufacturing, selective laser sintering, and 3D printing. So now in this class, in this lecture, we will discuss one by one. This mainly for, uh, five different techniques of rapid prototyping process. Okay. So first, stereolithography apparatus. So this is mm, uh, widely used rapid prototyping technique. It can produce a highly accurate and detailed polymer parts. Means, in this technique, polymer resins are used for producing the uh, product. Okay. SLA was the first rapid prototyping process, and it introduced in 1988 a 3D system. Uh, So this production of parts by addition of material instead of removal, like in this stereolithography apparatus, the parts of product are produced by uh, just addition of layer, means one layer over another layer. Okay, layer by layer, just making layer by layer of polymers resins instead of just removing of material. Means in case of traditional machining, in case of traditional manufacturing process, we have removed. In case of traditional manufacturing process, the desired product are produced by just removing of the material from the work. But in this case, the product are produced by just means layer by layer construction, means one layer over another layer. Okay, so just see this technique, means how this technique works. So like this is a laser beam source. So this laser beam source actually this laser beam source polymers resin polymers will deposit according to the slice of the model. Means first you have to construct a model in CAD, and then you have to convert this CAD model into a SLS format. SLS file format means .SLS. Then you have to slice the model into different thin layers. Okay, and according to that thin layers, those thin layers actually formed one by one during the rapid prototyping process. Okay, so this technique layer by layer of material, means which material you used, like polymer resins or whatever. This layer by layer polymer polymer resins will formed from bottom to top. Okay. So principle of this stereolithography apparatus is this stereolithography apparatus is just a low power, high focused ultraviolet laser to focus the ultraviolet to produce.
uh, the, the, this stereolithography apparatus uses a low-powered, highly focused ultraviolet laser to produce a three-dimensional object. Three-dimensional object means a desired product. Okay. So, what are the different processes involved? So, first, this is based on the selective polymerization of a photosensitive resins using ultraviolet light. So, uh, here, the photosensitive resins, photosensitive polymer resins are used as a material, and these are used under a ultraviolet light. So, uh, ultraviolet laser sources. So means just see first this animated view means so this is actually the desired this gear having is the desired physical model. So this model first you have to construct the CAD model of this physical model, and then this have to convert this CAD model into SLS file format, and then slicing this, and then जो स्लाइसिंग की है वो स्लाइसिंग वन बाय वन लेयर फॉर्म में होगी मीन्स जस्ट सो फर्स्ट वन लेयर इज फॉर्म्ड देन ये जो टेबल विल मूव लाइक दिस ऐसे मूव करे ना सो मीन्स ये जो इसमें जो टेबल है इसमें एक्चुअली फोटो सेंसिटिव रेसिन रहती है मीन्स जो मटेरियल की डिपॉजिट होगी सो यार मीन्स ये जो लेफ्ट टू राइट जो मूव हो रही है वहीं मटेरियल जो मटेरियल डिपॉजिट होगी वहीं रहोगी वहाँ मटेरियल उसी टाइप मटेरियल वहाँ रहती है एंड जैसे वन पास होगी मीन्स फर्स्ट जैसे राइट टू लेफ्ट हो रही है तो एक लेयर बन रही है देन उसके ऊपर जो लेजर आ रही है दिस लेजर विल डिपॉजिट तो दिस लेयर मीन्स जो स्लाइस किए थे उसी अकॉर्डिंग टू उसी स्लाइस से वहाँ डिपॉजिट होगी एंड लेयर बाय लेयर और प्रोडक्ट बन जाएगी ओके so layer by layer curing of the liquid photopolymer by a laser control of laser by a scan mirror system so here the these processes are involved so lowering the table by the thickness of the layer means uh, जो लेयर एस एल एस फाइल फॉर्मेट पर जो जितना लेयर में डिवाइड किया था तो लेयर की जितनी थिकनेस है उसी थिकनेस उसी अमाउंट ऑफ थिकनेस टेबल को डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है जी के जैसे वन पास होगी तो उसी अमाउंट ऑफ टेबल को डाउनवर्ड मूव करनी है एंड सेकेंड लेयर ऑफ दैट अमाउंट ऑफ थिकनेस विल फॉर्म ठीक है तो फर्स्ट जैसे एक लेयर बन गई देन सेकेंड लेयर बनने के लिए जो लेयर की जो थिकनेस है वो सेम अमाउंट टेबल को डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है ओके तो ये जो टेबल को डाउनवर्ड मूवमेंट एंड जो पॉलीमर की जो डिपॉजिट हो रही है एंड लेजर बीम जो आ रही है तो सारे मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होगी वो ऑटोमेटिकली रन होगी एंड अकॉर्डिंग टू द कैड मॉडल कैड मॉडल की जिस टाइप की कैड मॉडल रहेगी उसी अकॉर्डिंगली वो रन होगी ओके so lowering the table by thickness of the one layer application or labeling of liquid resin then scanning with laser again lowering of the table and again this steps will repeat and the second layer will form so by this way layer by layer will form and ultimately
will get the physical model. Okay, clear? Hello. Yes, sir. Okay. जी सर. So, so what are the process chains of stereolithographic apparatus or stereolithography apparatus process of process for rapid prototyping. So first, CAD model develop means 3D CAD model construct करनी है. So first you have to construct 3 CAD model 3D. Uh, 3D data, 3D CAD model data. Then convert this 3D CAD model into STL data format. Represented of the surface by small triangle means HTML data format means जो surface में small triangles or squares तो form हो रही ना so this type of mark uh, means HTML फॉर्मेट में जैसे कन्वर्ट होगी मीन्स दिस टाइप ऑफ मार्क आएगी सरफेस में मीन्स स्मॉल ट्राइंगल और स्मॉल स्क्वायर टाइप की मार्क आएगी. ओके. तो ये एक्चुअली मार्क किया जाता है क्योंकि क्योंकि अगर इसे मार्क होगी देन द मॉडल कैन बी स्लाइस्ड वेरी एक्यूरेटली मीन्स एज फॉर एग्जांपल सपोज किसी को स्लाइस करनी है सपोज केक को स्लाइस करनी है देन ये you can slice the cake in a better way if you mark the slice previously means अगर अब मार्क कर लेंगे तो वो सही से स्लाइस होगी. तो लाइक दैट मीन्स फॉर स्लाइसिंग द कैड मॉडल जो कैड मॉडल डेवलप किया है वो स्लाइस करने के लिए HTML फॉर्मेट फॉर्मेट करना पड़ता है. ओके. HTML फॉर्मेट मीन्स जो मॉडल है उसके ऊपर सरफेस में ऐसे ट्रायंगल और स्क्वायर टाइप की स्मॉल स्मॉल स्क्वायर टाइप की मार्क आएगी. ओके. Then generation of supported data means जो HTML फॉर्मेट कन्वर्ट किया then uh, then coding or supported data generate करनी है and will be built up together with the part means uh, आफ्टर HTML फाइल कन्वर्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगी तो दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए हनी बी स्ट्रक्चर हनी बी स्ट्रक्चर जिस टाइप की होती है ना हेक्सागोनल टाइप की इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी. ओके. Then slicing of parts, geometry, and support data into layers means different slice में उसको divide करनी है different layer by layer slicing करनी है means top to bottom. Okay. means one over another means uh, slicing जो किया जाता है ऐसे means top to bottom एक के ऊपर एक स्लाइस किया जाता है. ओके. साइड बाय साइड नहीं मीन्स साइड जो किया जाता है टॉप टू बॉटम ऐसे. ओके. मीन्स जो लेयर एक्चुअली फॉर्मेशन होगी वो बॉटम से टॉप तक आएगी मीन्स फर्स्ट बॉटम लेयर फॉर्मेशन होगी देन बॉटम Okay, लेयर sir. के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो फॉर्मेशन होगी देन ऐसे करके टॉप लेयर तक आएगी. ओके. So then process setup data transfer to the machines uh, setting up of a job part of building process. Then production means layer by layer formation. और जो लेयर स्लाइस किया है उसको लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करनी है. देन अगर उसमें कोई सपोर्ट का जरूरत है देन यू हैव टू रिमूव दिस सपोर्ट मीन्स समटाइम्स वो स्लाइसिंग करने के टाइम सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो अगर सपोर्ट है मीन्स सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है देन यू हैव टू डिटेल दिस सपोर्ट
means removal of the support finish if required. Then finally जो प्रोडक्ट मिलेगी उसको क्लीन करनी है एंड फिनिशिंग करनी है. तो फिनिशिंग बाय अल्ट्रावायलेट लाइट और क्यूरिंग अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट. ओके. तो वर्किंग प्रोसेस मैंने बताया तो सेम ही है, जस्ट इसमें लिखा है और कुछ नहीं. तो डिटेल से लिखे है. ओके. कितना सपोज कितना हाइट ये करनी है, कितना टेबल को कितना तक लोअर करूँगा, ये डिटेल से लिखी है यहाँ. ओके. ओके. सो जस्ट रीड इट मीन्स जो मैंने बताया उसको डिटेल्स यहाँ लिखा है. तो लाइक द बीम में क्योर्स दैट द पोर्शन ऑफ द photopolymer and thereby produce a solid body. The platform is then lowered sufficiently to cover the cured polymer. Means जितना लेयर की थिकनेस है उसी अमाउंट ऑफ टेबल को मूवमेंट करनी है डाउनवर्ड्स. ओके. विथ अनदर लेयर ऑफ लिक्विड पॉलीमर एंड the sequence is repeated. Means uh, जो फर्स्ट लेयर बनने के टाइम जो सीक्वेंस प्रोसेस ये किया था, सेकंड लेयर बनने के टाइम सेम सीक्वेंस रिपीट होगी लाइक दिस. ओके. द प्रोसेस इज रिपीटेड until लेवल बी इज कवर्ड. मीन्स बी लेवल तक जैसे ना करिए उतना तक प्रोसेस रिपीट होगी. फर्स्ट फॉर वी हैव जनरेटर. मीन्स ऐसे जो प्रोडक्ट है लाइक सिलिंड्रिकल, अगर थिन वॉल थिन वॉल सिलेंडर है, थिन वॉल थिकनेस सिलेंडर है. तो जितना तक उसका हाइट ये करनी है उतना तक लेवल लेयर बाय लेयर ट्रांसफर करनी है. ओके. मीन्स अगर जो प्रोडक्ट की सपोज जैसे पार्ट्स में है तो फर्स्ट पार्ट टॉप लेवल तक आनी है, देन सेकेंड पार्ट. ओके. तो जस्ट जो मैंने बेसिक प्रोसेस बताया तो दिस इज उसी का डिस्क्रिप्शन है. ओके. So like this, I think you will understand. Just read. So just for example, after the proper thickness of the liquid has been cured, the process is repeated, producing another cylindrical section between the level B and C. Means अगर B and C के अंदर में और एक पार्ट है तो उसको डेवलप और कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेम जो प्रोसेस किया था उसी सेम प्रोसेस रिपीट होगी. ओके. मीन्स लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्ट होगी. ओके. So, some advantages and disadvantages of stereolithography purpose are there. Advantages like achieving accuracy in industries. Means, industry में कोई पार्ट का प्रोड्यूस करने के लिए दिस SLA process is very accurate means accurate geometry can product of accurate geometry can be produced by this SLA process. Okay. Capable of high detail and thin wall. means अगर thin wall cylinder और thin wall कोई प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट करनी है तो दिस प्रोसेस इज very suitable. The thin layered thin wall thickness की कोई प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करनी है. ओके. वेरी गुड सरफेस फिनिश कैन बी obtained by this SLA process. हाई पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स अगर प्रोडक्ट शेप एंड जियोमेट्री वेरी कॉम्प्लेक्स है देन दिस प्रोसेस इज वेरी सुटेबल.
So these are the advantages. Disadvantages requires post curing. So means uh, after after finishing the product, curing or finishing is required. Means जो सरफेस जो मिलेगी उसमें एक्चुअली अपनी सरफेस मिलेगी बट उसको क्लीन करनी है. तो रिक्वायर फॉर क्यूरिंग some warpage, shrinkage, and call due to phase change maybe there means uh, due to phase change, material means shrinkage defect or calling defect may be formed in the product. Okay, when calling defect or shrinkage defect हो सकती है. Limited materials मीन्स जो फोटोपॉलीमर्स यूज कर रहे हैं यहाँ फोटोपॉलीमर्स यूज किया जाता है. तो दिस फोटोपॉलीमर्स इज वेरी लिमिटेड मटेरियल्स not widely available in market. Support structure always needed in this process. Support structure are required, and removal of this support structure can be difficult. तो जो सपोर्ट स्ट्रक्चर यूज करूँगा उसको रिमूव करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होती है. ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज. सेकंड, rapid prototyping process is fused deposition modeling (FDM). So fused deposition modeling. So this is a solid based rapid prototyping method. So in this method, here the material used, that material is actually in solid form, and this material extrudes layer by layer and build a model. Okay, means whatever the required product. So just the solid material will extrude from extrusion nozzle, and layer by layer will construct, layer by layer will construct, and ultimately will build the or construct the physical model. So just see this animated view. So means just first a layer is formed, then in the first layer the second layer is formed. So like that. Okay. एंड जो लेयर फॉर्म हो रही है मीन्स जो मटेरियल आ रही है वो एक एक्सट्रूड मीन्स तो जिसमें एक अरेंज में रहती है. सो दिस इज फॉर एक्सट्रूडिंग दिस मटेरियल. जो मटेरियल डिपॉजिट होगी, जो मटेरियल की प्रोडक्ट बनेगी एक्चुअली. ओके, सो एक एक्सट्रूशन नोजल है, यहाँ से मटेरियल एक्सट्रूड होगी. जैसे एक्सट्रूड हो रही है ना, यहाँ देखो मटेरियल जैसे एक्सट्रूड हो रही है. ओके, मीन्स जो डिपॉजिट हो रही है. ओके, तो यहाँ से नोजल से मटेरियल एक्सट्रूड होगी. ओके, and so it was developed by Stratasys. So process here melting of a wire shaped plastic materials and depositions with a XY floater mechanism. Characteristics of this process is limited part complexity means इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी उसका जो शेप एंड जियोमेट्री होगी. सो दिस शेप एंड जियोमेट्री एक्चुअली वेरी सिंपल मीन्स वेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड जियोमेट्री प्रोडक्ट कैन नॉट बी मीन्स डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट बाय दिस टेक्निक मीन्स फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग जो है इसमें by this using model very complex shapes and geometry product is not possible to construct. Okay, और डिफिकल्ट एक्चुअली प्रोडक्शन है ना वो डिफिकल्ट होती है क्योंकि इसमें जस्ट जो मटेरियल डिपॉजिट होगी जो मटेरियल की बनेगी वो जस्ट एक्सट्रूड हो रही है, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हो रही है. ओके, तो वेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स प्रोडक्ट
It's not suitable for constructing of a very complex shape material. It's not suitable uh, for this technique. Two different material per part and सपोर्ट मीन्स दो मटेरियल की ज़रूरत होगी एक जो पार्ट बनेगी उसकी एंड सपोर्ट सपोर्ट के लिए आपके मटेरियल की ज़रूरत होगी मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स शेप की है देन सपोर्ट मटेरियल की ज़रूरत है ओके so like this ये जो मटेरियल है सपोर्ट मटेरियल है ओके so in this process the material use होगी so this material is thermoplastic nylon wax this type of materials are used to in this technique. The principle of this process a plastic or wax material is extruded through a nozzle that traces the parts cross sectional geometry layer by layer. Okay, so in this case, metal means plastic or wax metal extruded through a nozzle. Okay, the nozzle रहती है. So through this nozzle, there is a nozzle है. So through this nozzle, the wax or uh, plastic material will extrude and trace the parts cross section ज्योमेट्री लेयर बाय लेयर मीन्स लेयर फॉर्म होगी एंड उस लेयर के ऊपर और एक लेयर फॉर्म होगी लाइक दिस ओके तो दिस डिपोजिशन modeling technique relies on melting and selectively depositing a thin filament of thermoplastic polymers in a cross heating session to form each layer of the part. Okay. तो इसमें जो मटेरियल यूज होगी so this material is in the form of wire supported in sealed spools. Okay, which is mounted on the machines and the wire is threaded through a this is FDM head. Okay, तो जो मटेरियल यूज होगी so this material either plastics or wax so this is in the form of wire supplied in sealed spools sealed spool सपोज स्पूल रहेगी तो वहाँ पर वायर जो मटेरियल यूज होगी मटेरियल विल बी सप्लाई टू वही सप्लाई होगी एंड देन this material will deposit through the extrusion nozzle. The head is moved in the horizontal XY direction. So जो head जो extrusion head है तो this part actually extrusion head ये जो part है extrusion head है so this extrusion head can move X and Y directions for producing each layer through zigzag movement means जिस type की layer है according to uh, according to the shape means according to the model जो CAD में डेवलप किया गया है तो according to that जो head can move X and Y direction. ओके जिस टाइप की ज़रूरत होगी उसी टाइप से वो मूवमेंट करेगी ओके जिगजैग की ज़रूरत है देन जिगजैग टाइप की मूवमेंट करेगी वो एंड जो वाई एंड जेड डायरेक्शन जो मूवमेंट है दिस जेड डायरेक्शन मूवमेंट इज डन बाय द टेबल जो टेबल है टेबल मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो दिस इज एक्चुअली जेड डायरेक्शन तो एक्स वाई डायरेक्शन में जो लेयर बनेगी
मीन्स जो सरफेस यानी कि मीन्स सपोज जो बॉटम सरफेस बना, तो जो सरफेस बनेगी दिस इज बाय द एक्सवाई मूवमेंट ऑफ द हेड। ओके, एंड उसके ऊपर जो लेयर बनेगी और एक लेयर मीन्स 3D मॉडल आना चाहिए ना, 3D ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो उसके ऊपर एक लेयर बनेगी। तो दिस लेयर विल डेवलप बाय जस्ट मूवमेंट ऑफ द टेबिल, टेबिल का डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। तो डाउन जैसे एक नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, तो नेक्स्ट लेयर जो पहले लेयर बने थे उसके ऊपर बन जाएगी। ओके, in FDM process, a gently robot control extruder head moves in two principal directions over a table, which can be raised and lowered as needed. Means, uh, uh, जो हेड का जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट ऑफ द हेड कैन ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय रोबोट, एंड एक्स वाई मूवमेंट तो होगी, एंड according to the requirement, this head can be move, means rise up and down also. Okay, according to the requirement, जो uh, ये जो head है, so this head can the movement of this head can be controlled by a robot also, means robot से control हो सकते हैं, and इसका एक्स वाई मूवमेंट होगी, एंड अप एंड डाउन भी पॉसिबल है। Okay. The thermoplastic filament is extruded through the small orifice of a heated wire. The initial layer is placed on a foam foundation by extruding the filament at a constant rate, while the extruder head follows a predetermined path. Then the first layer is completed. The table is lowered so that the subsequent layer can be superimpose, मीन्स फर्स्ट लेयर ऐसी फर्स्ट लेयर बन जाएगी, एंड जो सेकेंड लेयर होगी, देन सेकेंड लेयर विल फॉर्म्ड सिमिलर टू, तो उसी प्रोसेस से सेम प्रोसेस से सेकेंड लेयर बनेगी, एंड दिस सेकेंड लेयर विल सुपर इम्पोज विद द फर्स्ट लेयर। तो ऐसे लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्ट होगी, मीन्स जो फिजिकल मॉडल है फिजिकल मॉडल बन जाएगी। In some parts, the filament is required to support the slice where no material exists beneath to support it. Means sometimes support की जरूरत होगी, uh, so to slicing uh, support the slice has no material existed beneath to support it. It means some filament is used as a supporting materials. A solution is to extrude to a support material separately from the modeling material. The use of the such support structures allow all the layers to be supported by the materials directly beneath them. तो दिस एक्चुअली सपोर्ट के बारे में लिखा है, मीन्स अगर सपोर्ट की जरूरत होगी, देन हाउ द सपोर्ट एक्चुअली कैन बी गिवन। ओके, so जो लेयर बनेगी, so this layer in FDM model are determined by the extrusion die diameter, means extrusion die की diameter कितनी होगी, मीन्स अगर diameter ज़्यादा है, then जो लेयर बनेगी उसका थिकनेस ज़्यादा होगी। ओके, so which typically ranges from 0.05 mm to 0.12 mm, मीन्स जो डायमीटर होगी टिप की डायमीटर, मीन्स जो एक्सट्रूशन नोजल है, तो दिस द डायमीटर ऑफ दिस नोजल और द एक्सट्रूशन उसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीन्स लेयर की जो थिकनेस है। ओके, मीन्स अगर जो टिप डायमीटर ज़्यादा होगी, देन
जो थिकनेस फॉर्म होगी, so this thickness will be also थिकनेस भी ज़्यादा होगी, लेयर की थिकनेस। तो जो डायमीटर है और दिस डायमीटर रेंज फ्रॉम 0.05 to 0.12 mm। ओके। In XY plane, dimension accuracy can be as fine as 0.025 mm। मीन्स जो एक्स वाई प्लेन में मीन्स सपोज लेंथ एंड length and width. Okay, suppose a block, you have to develop a block, then the XY plane means length and width, along this length and width of the block। so along this length and width dimensional accuracy जो मिलेगी इसका जो टॉलरेंस है, so this tolerance very fine tolerance dimension मिलेगी, and this tolerance range will be 0.025 mm। means very accurate dimension you can get along x and y plane, means along the length and width of the block। Okay, so this pure deposition modeling is summary, means what type of material used in this technique, solid material used, solid filament materials used, means this is the type of material, solid type of materials used, and what are the materials? So like now, the polyphenol, sulfonite, ABS, polycarbonate, wax. Okay, so this type of materials are used in a FDM process। Minimum layer thickness in this case, on this technique, minimum layer thickness can be achieved 0.15 mm। Surface finish is rough। Build speed means production rate is slow, means compared to the previous one। Application, this technique applied in form, fit testing, functional testing, small detail parts, presentation models। So to build this type of product, this techniques used applicable other applications। The advantages of this technique is this technique is durable। yeah, the जो part बनेगी, this part is durable, means longevity ज़्यादा है। Durable parts can be made at this process। Minimal wastage means इसमें जो material waste होगी, so this material wastage wastage of material is very minimum। Easy handling material changeover and support removal, means material can easily handle। No post curing, means in this process after constructing the model, physical model, the post curing process means finishing process is in this case means no post curing process is there, means जरूरत नहीं होगी। Office environment friendly, means this process can be used in uh, uh, written friendly environment, means जो low and economical machines, means compared to the previous one, others our prototyping rapid prototyping techniques, this process is low cost technique compared to the other rapid prototyping techniques। Easy material changeover and support removal, means in this case the material can easily change, and जो support की जरूरत होगी, so this support can be removed very easily। Variety of materials can use। Okay, but disadvantages are there। Disadvantage means longer to build, low accuracy compared to stereolithography apparatus,
not good for small features, details and thin walls. Surface finish is rough. Upward design or integration or removal is difficult. So design of the support, integrating of the support and the removal of the support is difficult. Weak z-axis means the movement of the table. In this case, जो product बनेगी, so along this z-axis, this product is weak. Means uh, along this z-axis, means suppose as for example, uh, a block uh, we construct through this process. Then block की जो z axis means along this height जो along this height ब्लॉक का जो strength होगी, तो this along this height वो weak होगी. Means you can easily deform along this length, but uh, sorry, you can easily deform along the height, but along this length and the breadth width जो है, लेंथ एंड width along this length and width strong होगी, but along the z axis weak होगी. Okay. Slow and large dense product can be uh, constructed by this model. Support required on some materials, geometries. So some cases some support materials are required. Okay. Another technique is selective laser sintering, SLS. So in this case, a laser source is used. From this terminology, uh, I think you understand that a laser media is used. So, selective laser sintering is a process based on the sintering of non-metallic or metallic powder selectively into an individual object. So, in this case, non-metallic or less commonly metallic or metallic powders are sintered sintered selectively into a individual object. So just see this animated view. So just see here, right to left एक मूव करिए ना, ब्लॉक जो मूव करिए, तो इसमें एक्चुअली मेटालिक पाउडर और जो मेटालिक पाउडर सिंटर्ड होगी, मीन्स जो मेटालिक पाउडर से पार्ट्स बनेगी, तो जो मेटालिक पाउडर बॉक्स में रहती है, एंड जैसे वन पास होगी तो एक लेयर बनेगी एंड उसी लेयर डिपॉजिट होगी थ्रू दिस और सिंटर्ड होगी थ्रू दिस लेजर सोर्स. जो लेजर सोर्स आ रही है उसी लेजर सोर्स से वो सिंटर्ड होगी दिस ऑब्जेक्ट. ओके. So see, so this is actually suppose the laser source. So means एक लेंस भी रहता है, so means to focus this laser source. Okay. तो इसे laser source या focus होगी to this lens and this laser source का जो movement है ये यहाँ से means रोटेट किस एंगल से ये करनी है, कहाँ करनी है, focus and placing can be controlled by this mechanism. Okay.
and एंड ये जो रोलर मूवमेंट कर रही है, ओके, तो दिस मटेरियल्स जो वाटर मटेरियल की मीन्स जिस मटेरियल की प्रोडक्ट बनेगी, तो दिस मटेरियल the form of powder and supply through this roller. Okay, so this roller actually will move along this table like this. Okay, so when this roller moves in this direction, तो फर्स्ट एक लेयर बन जाएगी। ओके, देन ये वापस आएगी। ओके, तो जैसे वापस आएगी ये जो टेबल है, दिस टेबल विल मूव। ओके, एंड ये जो फिर नेक्स्ट टाइम आएगी तो और एक लेयर बनेगी, and this layer will deposit or actually sintered through this laser, uh, through this laser. Okay, so this selective laser sintering was patented in 1989. So first type means two type of SLS process are there. First in first type, uh, this produced by a 3D system. USA in USA developed and patented by University of Texas and Austin in Austin. Okay, so in this type 1 SLS process, they use the materials like thermoplastic materials or metallic materials, ceramic materials, and thermoplastic composites. So So this means different materials like the thermoplastic, metallic, ceramics, thermoplastic composites materials are used to develop the physical model. Okay, so they developed different models like 2000, 2500, 2500 plus Vanguard. So these models they have developed, and so this is actually the schematic view of this SLS selective laser sintering process. So that I have told. So this is the laser source, carbon dioxide laser source. Suppose this laser source, laser will come from this laser source, and एक स्कैनिंग सिस्टम है, मीन्स कहाँ लेजर फोकस करनी है, तो means at where the laser have to be focused. So this can be made by this laser scanning system. So ये laser focus करनी है, ऐसी place and focus भी करनी है। So this can be done by this scanning system, and this scanning system is done according to the जो CAD model develop means CAD model जो construct होगी, so this CAD according to the CAD model a scanning system will run करेगी। Okay, this is the power leveling roller, so means powder leveling roller। यहाँ पाउडर बेड रहती है, सो दिस इज द पाउडर बेड। इसमें पाउडर है, जिस मटेरियल की प्रोडक्ट बनेगी, तो दिस मटेरियल उसी मटेरियल की पाउडर इसी बेड पर है, एंड दिस रोलर विल मूव। ऐसे रोलर मूव करेगी, तो जैसे रोलर मूव करेगी तो दिस पाउडर विल, इसी जो पाउडर है इसी पाउडर की एक लेयर बन जाएगी। यहाँ पाउडर की एक लेयर बनेगी ना, वो पाउडर लेकर आएगी इसी करके, तो पाउडर की एक लेयर बनेगी, एंड जो लेजर सोर्स आ रही है, दिस लेजर सोर्स जो लेजर है, ये लेजर ये पाउडर को यहाँ सिंटर्ड करेगी लेयर बाय लेयर। ओके, सो सपोज ये फर्स्ट लेयर है बन गया, देन ये जो रोलर है ये भी वापस आएगी फिर, एंड नेक्स्ट टाइम जो आएगी
फिर और एक लेयर बनेगी। ओके, एंड यहाँ जो पाउडर एक्सेस हो रही है, तो दिस एक्सेस पाउडर विल कम यार, मीन्स जो लेयर बन गया, लेयर बनने के बाद जो पाउडर एक्सेस रहेगी, यहाँ एक्सेस पाउडर विल टेक दिस बेसिन, यहाँ पर एक्सेस पाउडर स्टोर होगी। ओके, सो फर्स्ट जैसे एक लेयर बन गया, देन जो रोलर है, दिस रोलर विल कम means return back. Okay, and again this roller will go to in this direction, ऐसे इसी डायरेक्शन पर आएगी। ओके, एंड और एक लेयर बनेगी, एंड दिस लेयर विल सिंटर्ड दिस कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, लेजर से वो लेयर सिंटर्ड हो जाएगी। ओके, तो और एक लेयर बनेगी, तो ऐसे लेयर बाय लेयर बनते जाएगा। ओके,